लबलबा एक अज़ू और गदूद है। गदूद ऐसे अज़ा हैं जो जिस्म में मादा पैदा करते और खारिज करते हैं। लबलबा दो अहम काम अंजाम देता है। एक्सोक्राइन फंक्शन जो ऐसे मादे एंजाइम्स पैदा करता है जो हाजमे में मदद करते हैं। एंडोक्राइन फंक्शन ऐसे हार्मोन भेजता है जो इंसानी जिस्म में शुगर की मिकदार को कंट्रोल करता है। मुख्तलिफ किस्म के कैंसर्स की तरह लबलबा का कैंसर भी बढ़ रहा है और इसकी रोकथाम के लिए महकमा सेहत कोशां है। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का शोबे सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी गुज़श्ता 2 दिहाइयों से मरीजों को सुपर स्पेशलिटी के तौर पर टेरिशरी केयर देखभाल फराहम कर रहा है। महकमा हफ्तावार बुनियादों पर ओपीडी और पीडियाट्रिक क्लिनिक का इनेकाद भी कर रहा है। एक मामूल के तौर महकमा इंतहाई माहिर तशखीसी और इलाज के तरीक़ेकार को अंजाम दे रहा है, जिसमें ERCP वगैरह शामिल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी SKIMS ने बेनाइन एंड मैलिग्नेंट डिजीज ऑफ पैनक्रियाज के उन्वान के तहत 2 रोजा वस्त मुद्दती IHPBA इंडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम आ चुके हैं शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोरा श्रीनगर में, जहां 2 रोजा मिड टर्म कॉन्फ्रेंस हेल्ड हो रही हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की तरफ से हैं, जिन्होंने ताउन किया है IHPBA इंडिया के साथ, और जिसमें इस वक्त हिंदुस्तान के कई एक्सपर्ट्स आ चुके हैं इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने। और ये कॉन्फ्रेंस स्पेसिफिक जो है, जो कैंसर और नॉन कैंसरस डिजीजेस हैं पैनक्रियाज की, उस पर डिस्कस करने की। नाज़रीन, पैनक्रियाज जो हमारे जिस्म का अहम ऑर्गन है, हमारे जिस्म में डाइजेस्टिव जूसेस बनाती हैं और हमारे जिस्म में इंसुलिन स्क्रीट करती हैं, जो कि हमारी डाइजेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कई सारे एक्सपर्ट्स आ चुके हैं अपनी राय इजहार करने के लिए, और अपने एक्सपर्ट से भी जानने की कोशिश करेंगे आज की कॉन्फ्रेंस के हवाले से। कॉन्फ्रेंस के पहले रोज की शुरुआत इफ्तिताही कलीदी नोट सेशन से हुई, जिसमें तजुर्बाकारों को सुना गया। Sample size is very important because many times we do RCT, we might not reach the end point of the sample, then it becomes a difficulty. So whenever we are doing our randomized control trials, we find out that this much population, this much study, we will complete. If you don't complete, then you find a problem. Otherwise, you will commit these errors, and then you have to find out the meaningful difference, what we call it. And if you don't have a proper thing, then you can commit these errors, type 1 error or type 2 error. Type 1 error is false positive. For many years, open necrosectomy was the gold standard of managing these patients. Many patients owe their life to this procedure, but unfortunately many patients lost their lives also because of open necrosectomy, because it's a morbid procedure, and in patients who have impending organ system failure or established organ system failure. The problem is that now we started believing that open necrosectomy is something terrible. It is sacrilege. If you do this procedure, that department is not very good, and that's possibly not true. प्रोफेसर R.A. शास्त्री, प्रोफेसर शैलेश शेरखंडे, प्रोफेसर संजय गोविल, प्रोफेसर M.S. खोरू और प्रोफेसर शौकत अली जरकर इस निशस्त के चेयरपर्सन्स थे। SKIMS के डायरेक्टर इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे और IHPBA के सदर संजय गोविल गेस्ट ऑफ ऑनर थे। प्रोफेसर R.A. शास्त्री और प्रोफेसर पुनीत धर और प्रोफेसर चेतन कंथारिया सभी ने महकमे की तरफ से किए गए शानदार साइंसी प्रोग्राम की तारीफ की। प्रोफेसर परवेज कोल ने 2005 ईस्वी में SGE डिपार्टमेंट के आगाज को याद किया और जो तवील फासला इस शोबे ने कामयाबी से तय किया, इसकी तारीफ की। From its inception in 1980s with Professor Khuru, and then followed by Professor Zager leading the mantle, and then of course it was Professor S. Jalal who thought of having a side stream from the surgical department and having an independent department of surgical gastroenterology. And then Professor Umar Javed Shah came into the scene, and he led the foundations of the department. In fact, he's one person I am missing out here today, and he has been the force behind actually starting the department, garnering the department, probably mentoring everybody who is a faculty now,
The department is doing very well in terms of teaching as well, and we have now the MCH program running. I think is the third year in running. I congratulate the Department of Surgical Gastroenterology for having organized this very important conference, and I wish the deliberations a very great success. Thank you so much. इनके अलावा दीगर सरकर्दा शख्सियात ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। Professor O.J. Shah, who was a surgeon, and he showed his interest in surgical gastroenterology, and we can call him a father of surgical gastroenterology in Kashmir. Once he left, the department was already had a good faculty in the form of Professor Sadaf Ali, then Dr. Yunus, and then few juniors had also joined. So once he left, it was a full-fledged MCH course. They had already 2 seats every year. So it's a good thing. People from all across the country are coming, getting trained. So as of now, I think Sri Krishna Institute of Medical Sciences, Surgical Gastroenterology also has a name at the national level. It is important for us that we keep on constantly upgrading ourselves. Executive Committee of the IHPBA to hold CMEs at various parts of the countries, and we have been successful in conducting it. To the people who are residents, especially residents who are present here, I would urge them that if they are not already a member of IHPBA, to become. It's a very easy process. You can do it online, and you require just 2 referees to propose you, and things can be done online very easily. We have a lot of exciting things happening, and especially for people who are members, they can take advantage of it. And our site also, which has been upgraded, is very vibrant, interactive. You can take advantage of it. So with this, and once again thanking Dr. Sadaf and the SKIMS administration for holding such a wonderful CME. Thank you. And I must at the outset express how proud I feel to see Dr. Sadaf donning a new role here, and I've been closely observing her progress ever since she left the portals of NIMS. Work that is being done in this institute is an envy to many of the public institutions even. Thank you, Dr. Sadaf, for inviting me here and addressing me as a mentor. Although once you achieve your qualifications, the difference between a teacher and the student gets less and less, and in fact to the extent that the roles reverse. You start learning from your own students. That is the situation now we are faced with. That makes me feel a little old, but that I don't mind seeing a student progressing so well and feel so proud of. I definitely wish her all the best and wish this great institution and the department all the encouragement it deserves, and I'm sure we are going to hear more and more about this department in the years to come. It's always a pleasure to be back home, and I think it's an absolute delight to see the growth of this institution. The medical gastroenterology was already world famous when as soon as I finished my training in the early 90s. But to see the growth of the surgical gastroenterology also has been no less. And I remember initial days when Omar and Sadaf used to be, hurriedly organizing conferences on their own. But now it's lovely to see all the younger colleagues also join in much larger numbers. The DNB program starting, and subsequently now even the MCH starting, gives it complete legitimacy, and the volume and amount of work they're doing is absolutely brilliant. I really sincerely wish all success, and with a lot of other facilities. We had the telemedicine people also here a little while back. I hope that through the valley and through the rest of the state we have all HPB and other surgical facilities available to everybody at the lowest cost possible. I wish this conference and the organization in the state all success. Working with the IHPBA and being so persistent and passionate about holding this
meeting with Dr. Chetan and Dr. Sujoy Pal, who's our scientific chair, to put forward an excellent program, scientific program for this event, and also to get together an absolute galaxy of faculty. You've got the best and most experienced pancreatic surgeons in the country speaking at this meeting here today, and it will be really, really useful to the delegates. So I'd like to thank them as well, both the faculty and the delegates, and all the Dr. Sadaf and her team, as well as the administration of the Sher-e-Kashmir Institute of Medical Sciences for helping to put up this wonderful show, what I'm sure is going to be a huge success. प्रोफेसर सदफ अली एचओडी सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस जूनियर डॉक्टरों और दीगर फैकल्टी मेंबरान के इल्म में इजाफे का बाइस होगी। इन्होंने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में अपनी शिरकत से इसको कामयाब बनाया, और इसको मुमकिन बनाने के लिए इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया। To monitor the attendance and the signature of the people who are going to get the CME credit points related to the conference. I would request all of you to mark your attendance so that you don't have any hindrances in receiving your participation certificate. Thank you one and all. Welcome to the program. Now I request our chief guest, Professor Parvez Kool, to felicitate our guests on the dais. I would like to thank all the honorable delegates who blessed us with their presence. I am also very much thankful to all program advisory committee members and the invited speakers. Words are not enough to thank their constant guidance and support to shape the conference. But if time is money, then today you have spent millions for us. Thank you all for making this event successful. Have a wonderful staying in Kashmir. Enjoy the conference. Thank you. With this, we conclude our inaugural ceremony. I thank you all for being patient with us. लबलबे के सरफहरिस्त सर्जनों ने लबलबा की मुहलिक बीमारियों के मैदान में अपना काम पेश किया। As you can imagine, it's not uncommonly torn, and because it comes straight off from the superior mesenteric vein, you can get quite significant bleeding. Both of them combine together to enable a high R0 resection rate, and that enables some degree of respectability in the results that we get after operating patients with borderline resectable and at times locally advanced pancreatic cancer. These are examples of upfront resectable tumor. This is the example where the vein is involved 180 degrees, and this would be a borderline resectable. With the flow, this is standard for every single case we do. And then you get the gastroduodenal artery also out of the way. Skeletonization continues. Control over the portal vein, which is not involved, continues. Usually such tumors, the pancreas is fairly firm or hard, and you can take firm stay sutures. You divide with a knife, energy device or cautery, doesn't make a difference. You come to the supracolic compartment, and then you divide the neck of the pancreas, where we will finally reach the stage where we have some involvement of the vein. इसके अलावा कई एक सेशंस हुए जो पूरे दिन चलते रहे। हर एक निशस्त के आखिर में सवाल जवाब सेशन भी होता रहा। इसके अलावा पैनल डिस्कशंस का भी इनकाद किया गया। And I wanted to know that what was your positive yield of 30+ lymph nodes because of the radicality of the procedure. You have too many lymph nodes.
extracted? And what is the overall total experience of this surgical procedure? The reason for the 32 lymph nodes, the moment कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज भी कई प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया गया। अलग अलग जगहों से आए हुए सर्जनों ने टॉक पेश की और अपने तरीक़ेकार और तकनीक से हाज़रीन को आगाह किया। Falciform on the gallbladder tucking is very important as far as this long surgery is concerned, because that brings us to the area of hepatoduodenal ligament quite wide, quite clearly. So these are the two arteries which primarily supply the head and uncinate along with the dorsal pancreatic artery in some patients. With respect to the venous drainage, we have 4 primary veins which drain the head and uncinate. So technique can be total pancreatic duodenectomy, splenectomy, or that is more important for the malignant cases, and for benign cases you want to preserve organs, so duodenum and spleen preserving pancreatectomy, these are the techniques for total pancreatectomy. Loss of health, and also diabetes mellitus with organ involvement and end-stage renal disease and other organ disease. Pain is the most difficult problem to deal with, and we have different stakeholders for this pain management in chronic pancreatitis. Okay, it makes a lot of difference. Simple research. Okay, pointer trial. I think many of you will know, Dr. Rajesh Gupta just discussed, and I will not go much. So I think the ultimate stakeholders, we must discuss with the patient what his expectations are. When we say social rehabilitation, we could have a person with minimal pain who's using that as an excuse to stay back and let his wife go and do the work. And now it is our policy to place multiple drains and to make sure that each of these cavity is a catheter is placed. We have only experience of laparoscopic distal pancreatectomy with splenectomy in selected group of patients in benign tumors of distal pancreas. So find an optimal area where you need to divide now, which is normal pancreas, and then use electrodiathermy monopolar. हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों से आई हुई ख्वातीन सर्जन्स की भी एक अच्छी खासी तादाद ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। The next question is, how do we feed these patients? Is it enteral or parenteral? Are we looking at oral feeding or enteral feeding? And what is the mode of delivering the nutrition? Is it into the small bowel or into the stomach? So objective will be to know when to intervene, what are the types and time of intervention, what are various minimally invasive procedures, endoscopic drainage and debridement techniques, and role of open surgery in the present era. The risk of infection in the collections is directly proportional to the extent of necrosis, and it can be up to 50% when the necrosis is more than 50%. All series would unequivocally suggest that there is a lower incidence of new onset diabetes mellitus or worsening of pre-existing diabetes because of the increased volume of pancreatic parenchyma which is preserved. One need to see for the secondary changes in these imaging. And it is said that the presence of parenchymal atrophy distal to the mass as measured by the duct to parenchyma ratio. So as I mentioned, according to the part which is injured, the adjacent organs are affected, and the liver, spleen, stomach, major vessels, the chest, the kidney, bowel and the duodenum can be affected. कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले माहिरीन और दीगर लोगों में जबरदस्त जोशो खरोश पाया गया। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर संजय गोयल साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं आज पीबीए इंडिया, और डॉक्टर साहब से बात करेंगे आज की कॉन्फ्रेंस के हवाले से। सर, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, जो आज कॉन्फ्रेंस हेल्ड हो रही है शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोरा में, तो किस तरह आप देखते हैं कि ऐसी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए और क्या कुछ बोला जा रहा है आज की इस कॉन्फ्रेंस में? So thank you. This is the midterm conference of the IHPBA India chapter, which is being held in Srinagar at the Sher-e-Kashmir Institute of Medical Sciences and being organized in conjunction with the Department of GI Surgery, Gastroenterological Surgery at this institute, especially being led by Professor Sadaf, who is the head of department here. She has worked with our executive committee to help set up this national program.
It is focused on pancreatic diseases, and all the experts on pancreatic diseases from all around the country have come to participate in this and speak at this meeting, the foremost experts that our country has to offer. जब हम बात करते हैं जो कैंसरस डिजीज हैं पैनक्रियास की, कौन कौन से ऐसे खतरे हैं जो एक इंसान को बढ़ा देती है उसका होने का खतरा? मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि कॉमन लोग ये सोचते हैं कैंसर हो गया तो दुनिया तबाह हो गई, बर्बाद हो गए। ऐसा नहीं है। अगर आप ठीक जगह से इलाज कराएं, अच्छे डॉक्टर से मिलें तो इलाज पॉसिबल है। मेरी आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, कभी भी किसी सिम्टम को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको थकान हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, भूख नहीं लग रही, तो प्लीज अपने डॉक्टर से मिलिए और जो वो आपसे टेस्ट करने को कहता है वो टेस्ट जरूर कराइए। आज की साइंस में, स्किम्स में, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट में हर चीज का इलाज पॉसिबल है, पर वो तभी पॉसिबल है अगर पेशेंट टाइम पे आए। अगर मौका निकल जाए फिर आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं तो इलाज संभव नहीं होता है। We often see that people come in late stages, they come for treatment. What's the reason? So for any cancer, it's not only for pancreatic cancer. Generally the cancer has 4 stages, and usually the outcome depends upon at what stage we diagnose the cancer. If we diagnose the cancer at stage 1 and 2, you can cure in more than 50% of the patients. However, we often diagnose cancer in stage 3 or stage 4. Stage 4 means it is incurable, which means no treatment will be useful to the patient. And many patients we see in stage 3 where we do surgery along with chemotherapy. If anyone from one family is having the pancreatic cancer, is it that other members may be having the chances that they can also have the pancreatic cancer? So pancreatic cancers do run in families, but majority of the pancreatic cancers arise as a standalone cancer. So less than 10% of the pancreatic cancers run in families. 90%, 85 to 90% are arising from a pancreatic tumor, from pancreas with no previous history of pancreatic cancer in the family. So we have to be very careful. Yes, if somebody is affected, there is a possibility of increased chance that the other members are also affected. But what's more important is we should look at other reasons for having the pancreatic cancer. Pancreatic cancer yil diagnose gasan chi initial stages per kya treatment shashnis dastiyab, to in the late stages par chasan cancer tam vis kya treatment shashnis dastiyab? Cancer pancreas cancer lab yasan Kashir paithan yus miadas pötkin chu asan. Amik yus cancer chu sadece khod cancer khod mushkil. Kyazi yus early diagnose gasan achun kan tariqe tim asal tariqe except कि अगर अल्ट्रासाउंड करो सुमा करो रूटीनली करान क्या आसान ज़्यादातर बेमार इन 2 दिक अक्सर तकरीबन बोन 5-7% तथ मरलस मज कि दौद ऑलरेडी अमे नबर द्रामुत यह कैंसर वाहिद कैंसर वारिया खतरनाक अमे हिसाब तो अत इलाज वह सर्जरी पे वुचमुत कॉन्फ्रेंस सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ये डॉक्टर सदफ साहब हेड यमो अथ मुतलिक कॉन्फ्रेंस ये वुचने खतर करो ये अर्ली डायग्नोस बे क्या कर बेटर। डॉक्टर साहब आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी किस तरह के मर्ज को ट्रीट करता है, और आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज की कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे। जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी स्किम्स का है, तो हम मेनली जो हमारे जीआई ट्रैक्ट की अमराज हैं उनको सर्जिकली ठीक करते हैं जी। थैंक यू सो मच। आज की कॉन्फ्रेंस का मतलब हमारा ये है कि हमारा थीम है मेनली पैनक्रियाज है, उसका जो यहाँ जो पैनक्रियाज की तकलीफ है उन पे हमने जब बाहर से एक्सपर्टाइज मंगाई है उनसे हम वो अपने फील्ड में मास्टर्स हैं, वो अपने एक्सपीरियंस हमारे शेयर करते हैं, हम उनसे सीखते हैं, और बाकी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सीखते हैं। So it is a thought of exchange learning process and all that. Exactly. Thank you so much, Dr. Saab. Sir, we would like to know your experience regarding the conference. What was this conference all about, and what was your experience? Sure. I've been a founder member of the Indian chapter of the IHPBA, which we formed in 2001. I've been the past president of this association. The purpose of this association is to promote education, service and research and surgical quality in diseases of liver, pancreas और gall bladder. और ये एसोसिएशन की हर साल में
अलग अलग जगह पे अच्छी मीटिंग्स होती है। तो ये मीटिंग स्किम्स में बहुत अच्छी हुई है। एक पूरी नेशनल फैकल्टी है और लोकल एक्सपर्ट्स जो है कश्मीर के यहाँ के, वो भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं, वी कम एंड शेयर आवर नॉलेज विद देम, डिफरेंट सेंटर्स इन द कंट्री। और इसके साथ साथ इट्स ऑलवेज नाइस फॉर 1 or 2 days टू एक्सचेंज आइडियाज़ एंड देन गो बैक टू आवर वर्ल्ड and develop and learn from these ideas. ये यहाँ पे इंटरनेशनल रिप्यूट के जो फैकल्टी है उन्हें अपने डिमॉन्स्ट्रेशन की टेक्निक कैसे करें, क्योंकि देयर इज एडवांसमेंट इन पैनक्रियाटिक एंड हेपेटोबिलियरी सर्जरी, उन्हें अपने पूरे टेक्निक्स दिखाए। इस तरह से हमने अपनी एक्सपीरियंस यहाँ से मेडिकल यहाँ के SKIMS सौरा की भी जो हेपेटोबिलियरी पैनक्रियाटिक सर्जरी हो उनके बारे में भी शेयर किया अपनी एक्सपीरियंस। सो इट्स अ गुड थिंग टू लर्न फॉर द यंग डॉक्टर्स टू हैव टू सी द एडवांसमेंट इन द पैनक्रियाटिक एंड हेपेटोबिलियरी सर्जरी। So, ma'am, we would like to know your purpose of visiting today for this conference. What was your experience and what were your expectations from the event? Thank you very much. So, I'm from Nepal, and Professor Sadaf Ali invited me as a woman surgeon in HPB surgery, and I basically practice pancreatic surgery in Nepal, and I'm also the head of the Department of Surgical Gastroenterology at Tribhuvan University Teaching Hospital. So I'm with my colleague and few residents. So my expectation is to interact with the experts in India, and I'm happy to be in your beautiful valley, Srinagar. Thank you so much, ma'am. It is an important conference. इसलिए important है क्योंकि इसमें बहुत जो बिनाइन डिज़ॉर्डर्स हैं और मैलिग्नेंट डिज़ॉर्डर्स हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। उन पे लेटेस्ट एडवांस ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ क्या क्या हैं, एडवांस केसेस में क्या क्या कर सकते हैं हम कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी की फ्रॉम सर्जन्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये कॉम्बिनेशन हम सारे डिस्कस करते हैं और हम देखते हैं मुल्क में और दुनिया में क्या क्या चीज़ें नई नई आई हैं जो हम अपने पेशेंट्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और हेल्थ बेटर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मोर इम्पोर्टेंट इज ये कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन भी अवेलेबल है। सो अक्रॉस द कंट्री कई सारे लोग, कई सारे स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, ऑनलाइन ज्वाइन किए हुए हैं मीटिंग को। तो उनको भी एजुकेशन में डेफिनेटली इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। एंड अल्टीमेटली एवरीथिंग इज फॉर द पेशेंट्स बेनिफिट। पेशेंट की ट्रीटमेंट में इसका फायदा होगा। ये शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट सिंस लास्ट सो मेनी ईयर्स, एंड द डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में यहाँ पे सारे के सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। ये पेशेंट्स के लिए है, ये पेशेंट के अवेयरनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। And I must congratulate Dr. Sadaf Madam, who is the head here, and I wish all the best. And in this way, there will be definitely Sherek Institute will progress to higher levels. Thank you so much, ma'am, for sharing. नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा डॉक्टर सदफ अली साहिबा, जो कि चेयरपर्सन हैं आज के कॉन्फ्रेंस के और हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, आपसे शुरुआत में यही जानने की कोशिश करेंगे कि आज का जो कॉन्फ्रेंस है तो क्या मकसद रहा आज का कॉन्फ्रेंस हेल्ड करने का, और आज के कॉन्फ्रेंस में कौन कौन से एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने आज के प्रोग्राम में शिरकत की? आज का जो ये कॉन्फ्रेंस था, बेसिकली मकसद इसका यही था जो हम एम रखते, जैसे हमने डॉक्टर में भी बोला कि हम चाहते हैं कि कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो हम डॉक्टर्स हैं, जो सर्जन्स है, GI सर्जन्स है, जो पैनक्रियाटिक कैंसर को ट्रीट करते हैं, पैनक्रियाटिक डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये एक दूसरे के साथ अपनी नॉलेज शेयर करें। दूसरा इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जब हम ये वीडियो प्रेजेंटेशंस वगैरह एक डॉक्टर साहब अपना, दूसरा अपना ले आते हैं, तो हमारे स्किल शेयर हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। और बहुत इम्पॉर्टेंट इसका आउटकम जब आप बोलेंगे तो ये पेशेंट केयर में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे छोटे या जूनियर डॉक्टर साहब या साहिबाएँ अपडेट हो जाएंगी विथ लेटेस्ट वॉट एवर इज हैपनिंग इन द कंट्री, वॉट एवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, तो उस हिसाब से जो है हमारा पेशेंट केयर डिलीवरी बेहतर रहेगा। पार्टिसिपेशन के लिहाज से मैं बताऊंगी कि जो नेशनल बेस्ट फैकल्टी हैं हमारी इंडिया की, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, राइट फ्रॉम कोची, केरला टू कश्मीर। सो यू कैन सी कन्याकुमारी टू कश्मीर, ऑल डॉक्टर्स पार्टिसिपेटेड, जिनका GI सर्जरी में बहुत अच्छा योगदान या कंट्रीब्यूशन है। और इसमें हमारे जो एक बॉडी है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हेपेटोबिलियरी पैनक्रियाटिक सर्जन, उसका एक इंडियन सेक्शन है,
जिसके हवाले से ये इंडियन सेक्शन के हवाले से जो है हमारे जितने एग्जीक्यूटिव्स थे, प्रेसिडेंट IHPBA, सेक्रेटरी IHPBA, प्रेसिडेंट इलेक्ट वगैरह, प्रोफेसर सुजॉय पॉल, डॉक्टर संजय गोविल, डॉक्टर चेतन कंथारिया और प्रोफेसर RS शास्त्री, सब ने कंट्रीब्यूट किया और सब अपने तरीके से जो है चाहते हैं एंड रिजल्ट के हमारा जो इल्म है इस शोबे में वो बढ़े। ये जो बहुत ही ज़्यादा डेडली कैंसर है पैनक्रियाटिक, उसकी ट्रीटमेंट और इम्प्रूव हो जाए और कुछ और डिजीज है पैनक्रियाटाइटिस जिसके मामले में हम चाहते हैं कि ट्रीटमेंट इम्प्रोवाइज हो। नाज़रीन, जैसा कि आज की कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि कई सारे एक्सपर्ट्स ने अपनी राय इजहार करने की कोशिश की, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी हमारे पास दस्तयाब है जब हम डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की बात करते हैं। और हमें बिल्कुल उम्मीद है कि जो हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, हमारे जूनियर डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल थे, वो भी बाखबर हुए होंगे और इस प्रोग्राम के चलते आप भी बाखबर हुए होंगे। हमें बिल्कुल उम्मीद है कि ऐसे प्रोग्राम्स हम आप तक बार बार पहुँचाते रहेंगे। इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।